हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटा, आज हम बात करेंगे अबाउट मार्केट कंसंट्रेशन। मार्केट कंसंट्रेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट कंसंट्रेशन का मतलब क्या है। मार्केट कंसंट्रेशन का मतलब होता है मार्केट में कितनी पावर कुछ गिने चुने फर्म्स के पास है। हाँ, मार्केट में कितनी पावर कुछ कुछ लोगों के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर टोटल सेल्स या आउटपुट का बड़ा हिस्सा कुछ फर्म्स के कंट्रोल में हो, इफ टोटल सेल और आउटपुट मोस्ट ऑफ इट इज इन द हैंड ऑफ फ्यू फर्म्स, तो मार्केट को हम हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं। वी कॉल द मार्केट एज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, लाइक मोनोपोली, लाइक ओलिगोपोली। अगर बहुत सारे छोटे छोटे फर्म्स है, इफ द पावर इज फ्रेगमेंटेड, इफ द पावर इज स्प्रेड, जो मिलकर मार्केट को डिवाइड कर रही हैं, तो हम उसे बोलते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन, लाइक परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है। तो व्हाट इज मार्केट concentration? Market concentration basically describes the extent to which the power is distributed among the firm. किस बेसिस पे? How much of the share of the market is with how many firms? बात समझ में आती है? इज इट मेकिंग सम सेंस? क्लियर है? ठीक है, राइट इट विद मी बेटा। मार्केट कॉन्सेंट्रेशन describes the extent to which small number of firms dominate total sale, production, or capacity in a given industry. In a given industry, right? So it tells whether the market is market मोस्ट ऑफ द सेल ऑफ द मार्केट, ज्यादातर जो सेलिंग हो रही है वो कुछ लोग कर रहे हैं या ज्यादा लोग कर रहे हैं, राइट? सो हाई कॉन्सेंट्रेशन right, it implies that few large firms have significant market power, हैव सिग्निफिकेंट मार्केट पावर। तो क्योंकि कुछ फर्म्स के हाथ में ज्यादातर मार्केट पावर है, कुछ फर्म्स डिटरमाइन करेंगे मार्केट का आउटपुट। दैट मींस दीज फर्म्स, दे विल बी सेलिंग इट एट अ हाई प्राइस। दीज फर्म्स, हाई या लो, बट दीज फर्म्स will influence the price in the economy. So that means that these firms will influence price, output, और बैरियर्स टू एंट्री। सब कुछ इन फर्म्स के हाथ में। दे विल डिसाइड व्हाट प्राइस टू सेल एट, हाउ मच आउटपुट टू सेल, whether to create a barrier to entry or not. On the other hand, low concentration, it means that there is a highly competitive market. माने power is fragmented. Highly competitive market. So you have small firms
right? Who will compete for consumer, like perfect competition, right? Now the question is कि हम इस market concentration को measure कैसे कर सकते हैं? How can we measure the market concentration in the economy? तो सबसे पहला आता है बेटा concentration ratio. कंसंट्रेशन रेशियो बहुत ही सिंपल है. ये मेजर बताता है कि टॉप एन फर्म्स मिलाकर मार्केट शेयर का कितना परसेंटेज कंट्रोल कर रहे हैं. माने अगर मैं लिख दूं कि CR4, सो इट मींस टॉप 4 फर्म्स का कंबाइंड मार्केट शेयर कितना है. अगर मैं लिख दूं CR8, तो टॉप 8 फर्म्स का कंबाइंड मार्केट शेयर कितना है. ठीक है. अगर टॉप 4 फर्म्स का कंबाइंड मार्केट शेयर 60% से ज्यादा है, मतलब ये हाईली कंपेटिटिव है. और अगर टॉप 4 फर्म्स का मार्केट शेयर 40% से भी कम है, मतलब ये लो कॉन्सेंट्रेशन है. तो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन, ये लो कॉन्सेंट्रेशन. इसका एग्जाम्पल हो गया ओलिगोपोली, इसका एग्जाम्पल हो गया कंपेटिटिव मार्केट. ठीक है. अब पॉइंट ये है, इसका लिमिटेशन ये है कि कॉन्सेंट्रेशन रेशियो सिर्फ टॉप फर्म्स को देखता है. वो छोटे छोटे जो बहुत सारी और फर्म्स हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, राइट. बट पॉजिटिव बात यह है कि इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट. बहुत सिंपली हम इसको कैलकुलेट कर पाते हैं. ठीक है. तो आइए बेटा लेट्स राइट इट डाउन. concentration ratio, it is a simple measure of market power. It's a very simple measure of market power. It sums market share of the n largest firms in an industry. टॉप 4 फर्म्स, टॉप 5 फर्म्स, टॉप 6 फर्म्स, उनका शेयर कितना है, दैट इज व्हाट वी आर चेकिंग. सो लेट्स से दैट द मार्केट में जो फर्स्ट टॉप पे है फर्म, सपोज दैट फर्म it has 30% of the market share. Second firm has 25%. Third firm has 15%. And say fourth firm has 10%. Suppose मैंने बताया कि these are the 4 firms जिनका market share ये है 30, 25, 15 and 10. ठीक है. So top 4 firms का total market share is what बेटा? 30 plus 25 plus 15 plus 10. 7, 8. 80%. माने दिस इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड. 4 फर्म्स मिलकर ही 4 फर्म्स आर एबल टू टेक और कैप्चर 80% ऑफ द मार्केट. तो यूजुअली एज आई सेड, अगर ये 0 से 40% के बीच में है, वी एज्यूम इट टू बी लो कॉन्सेंट्रेशन. लो कॉन्सेंट्रेशन माने कंपेटिटिव, मोनोपोलिस्टिक. 40 to 60% इसको हम लूजली मोनोपोली बोल सकते हैं, बट नॉट मोनोपोली. तो ये हो गया मीडियम कॉन्सेंट्रेशन. एंड 60 to 100% ये हो गया हाई कॉन्सेंट्रेशन. माने यहाँ पे कोई डोमिनेंट फर्म है या यहाँ पे टाइट मोनोपोली है, राइट. नाउ व्हाट आर द प्रोस ऑफ दिस बेटा? दिस इज वेरी इजी टू कैलकुलेट, राइट. एंड व्हाट इज द कॉन्स?
लिमिटेशन क्या है कि हमने यहाँ पे सिर्फ टॉप 4 फर्म्स लिए, है ना. सो इट डज नॉट, मतलब इसमें वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ द रेस्ट ऑफ द मार्केट इज पिक्चर्ड, राइट. सो इट इग्नोर्स रेस्ट ऑफ द मार्केट. इट इज इग्नोरिंग रेस्ट ऑफ द मार्केट, ठीक है. सो ये नहीं पता कि बाकी फर्म्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, राइट. वी आर ओनली कंसर्न विद मैसिव लीडर्स, राइट. व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द मार्केट. एक और चीज है, ठीक है. सो कंसिडर दैट suppose there is a market where top one firm has 65% of the market. Second पे जो आ रहा है it has 7% of the market. Third पे जो आ रहा है it has 5% of the market. And fourth पे जो आ रहा है it has 3% of the market. ये top 4 firms हैं. Now if I add the total of top 4 firms, it is coming as 80%. Top 4 firms capture 80% of the market. But आप देख पा रहे हो that actually firm 1 is capturing the market alone. Firm 2, 3, 4, although ये descending order में I have written, तो ये आ रहे हैं top 4 में, but this is a market which is having clear market leader, clear market dominance. ठीक है. अब example number 2, top 1 firm captures 25% of the market. टॉप सेकंड फर्म पे जो सेकंड नंबर पे आ रहा है दैट आल्सो हैज 25% ऑफ द मार्केट. जो थर्ड पे आ रहा है दैट आल्सो हैज 25% ऑफ द मार्केट. एंड जो फोर्थ पे आ रहा है दैट आल्सो हैज 25% ऑफ द मार्केट. तो CR4 is still 80%. But these are actually 4 equal market power firms. So although in those situations में we notice that CR is coming out to be the same. आप देख पा रहे हो, the CR is coming out to be the same, but in fact they are very different. ये चीज बहुत ही अलग है दोनों ही केसेस में, isn't it? दोनों सिचुएशन सेम तो नहीं है. So because we are just adding without giving any weightage, it's a simple addition. The situation may look similar but they are very different. Actually वो काफी different होती है. Is it clear? ठीक है बेटा. अब जो नेक्स्ट हमारा रेशियो आता है दैट इज कॉल्ड एज HHI, हर्फिंडल हर्चमैन इंडेक्स. हर्फिंडल हर्चमैन इंडेक्स. HHI एक ज्यादा रिफाइंड मेजर है, इट्स अ मोर रिफाइंड मेजर. इसमें सभी फर्म्स के मार्केट शेयर का स्क्वायर किया जाता है. द मोमेंट वी डू स्क्वायर वी इंश्योर कि जिसका मार्केट शेयर ज्यादा है उसको वेटेज भी ज्यादा मिले. वी आर इंश्योरिंग दैट मोर द मार्केट शेयर मोर द वेटेज. ठीक है. तो इसमें हर एक के मार्केट शेयर का स्क्वायर करके फिर ऐड किया जाता है. अब HHI का फॉर्मूला जो रहता है वो रहता है समेशन SI स्क्वायर. सो शेयर को आप स्क्वायर करते हो एंड देन यू ऐड देम अप. मिनिमम HHI हो जाता है 0. 0 का मतलब होता है कि बहुत सारे फर्म्स हैं, हर एक का शेयर बहुत 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 कम है, इसलिए उनका स्क्वायर वैल्यू भी ना के बराबर आ रहा है. इट मीन्स दैट देयर इज परफेक्ट कंपटीशन. एंड मैक्सिमम HHI जो होता है दैट इज 10,000, माने प्योर मोनोपोली. जब एक ही फर्म के पास सारा 100% शेयर हो जाता है, सो 100 स्क्वायर इज 10,000. ठीक है. तो मैक्सिमम HHI ये हो जाता है. अगर हमारा HHI लेस देन 1500 है, then we say that it is low concentration or competitive. If the HHI is between 1500 to 2500, तो हम बोल सकते हैं it is moderately concentrated. And more than 2500 तब हम बोल देते हैं कि it is highly concentrated firm. एक अच्छी बात यह है कि इसमें हम सभी फर्म्स को कंसिडर कर रहे हैं और जो फर्म्स का शेयर ज्यादा है उनको वेटेज भी ज्यादा दे रहे हैं. ठीक है. सो लेट्स राइट दिस डाउन. राइट बेटा. द हर्फिंडल हर्चमैन इंडेक्स is the
gold standard for regulators because it accounts for every firm in the market. ये हर फर्म को कंसिडर करता है, हर्फिंडल हर्चमैन इंडेक्स. इट अकाउंट्स फॉर एवरी फर्म इन द मार्केट एंड प्लस it gives more weightage to higher share firm. Right? So what is HHI? Excuse me. S1 square plus S2 square and so on. ठीक है, where S is the market share. ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए अगर if I have to find HHI for this above question बेटा, तो it will be 65 square plus 7 square plus 5 square plus 3 square, और ये हो जाएगा 25 square plus 25 square plus 25 square plus 25. ठीक, now if this HHI, this is close to 0, then it is perfect competition. और सोचो सारा एक ही फर्म के पास 100% शेयर है, so it will be 100 square and बाकी फर्म्स के पास कोई शेयर नहीं है, so it will be this now. So this is maximum value of HHI, which means it is monopoly. It is monopoly. Okay. Now, if this HHI is less than 1500, please keep writing. So, unconcentrated या low concentration, between 1500 to 2500, then moderately concentrated या medium concentration, and above 2500, then highly concentrated. ठीक है जी, इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई एकदम? ओके, अब हम बात करते हैं अबाउट द थर्ड इंडेक्स. द थर्ड इंडेक्स दैट वी हैव, दिस इज कॉल्ड एज लॉरेंस कर्व, जो हम इनइक्वालिटी में भी पढ़ते हैं, एंड गिनी टाइप मेजर. लॉरेंस कर्व एंड गिनी टाइप मेजर. नाउ लॉरेंस कर्व हमने पहली इनइक्वालिटी में पढ़ा है, जहां पे हमने यहां पर क्यूमुलेटिव इनकम एंड क्यूमुलेटिव शेयर लिया हुआ था, राइट? सो this is cumulative of the population share and this is cumulative of income. And we said if 10% of the population has 10% of income, 20% of population has 20% of income, so there is perfect equality. And अगर हम curve बना दें तो then there is inequality. ऐसे किया था हमने, है ना? अब इसी चीज को we can go ahead and we can convert this in terms of the firms. ठीक है, so usually it is used for income inequality, but इसको हम market share के लिए भी use कर सकते हैं, right? So what we are going ahead and we are doing is we are taking again a curve, ठीक है, and there is a straight line, but now this represents perfect equality among firms. माने all firms are having equal size in the market, ठीक है, and when this curve is bowed, then this shows concentration in the market. ठीक है, is it making some sense? So the x-axis, it shows firms का cumulative percentage,
and the y axis it shows market share in cumulative percentage, है ना। तो यहाँ पे when it is board माने देखो ऐसा कुछ कह रहे हैं कि 10% of the firm, यहाँ पे 10 आता, so they only have say 2% of the market। तो मतलब बहुत सारे फर्म्स मिला के मार्केट का थोड़ा सा काउंट करते हैं, मतलब ज्यादा फर्म्स, मतलब जो मार्केट पावर है इट इज विद फ्यू फर्म्स, दैट इज व्हाट इट मींस, ज्यादातर फर्म्स के पास कम मार्केट पावर है, राइट। So the more you are away from this 45-degree line, the more concentrated that market is, right? This is usually a more theoretical tool. इसको हम ज्यादातर पॉलिसी मेकिंग में यूज करते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि लॉरेंस कर्व से अगर मैं इसको यहाँ पे 100% ले लूँ एंड यहाँ पे 100% ले लूँ, तो यहाँ पे एरिया ए एंड बी आते हैं, है ना। एंड हमें पता है कि वी कैन फाइंड गिनीज कोएफिशिएंट फ्रॉम लॉरेंस कर्व। अब यहाँ पे इन दिस कॉन्सेप्ट, इन दिस केस गिनीज कोएफिशिएंट का क्या मीनिंग रह जाएगा बेटा? सो गिनीज कोएफिशिएंट विल मीन दैट इफ इट इज जीरो, right, then it will mean perfectly equal firms, ठीक है। दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन इज लो, एंड इफ इट इज वन देन देयर इज हाईली इनइक्वालिटी। वन का मतलब हो जाएगा दैट देयर इज फुल इनइक्वालिटी, वन फर्म हैज 100% शेयर, माने मोनोपोली, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, है ना। तो गिनीज कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करना है सेम लाइक यू हैव बीन डूइंग इन इनइक्वालिटी, जस्ट दैट नाउ इसका जो इम्प्लीकेशन है दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। बात समझ में आती है? ओके, so now we want to go ahead and we want to look at one more index. So basically entropy is a data science term. If few of you ever think, अगर लाइफ में कभी मन करे कि डेटा एनालिसिस करना है, डेटा साइंस करना है, तो उसमें आप एंट्रोपी के बारे में पढ़ोगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। हाँ, मशीन लर्निंग अपने आप में इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो नाउ वी वांट टू गो अहेड एंड वी वांट टू टॉक अबाउट द एंट्रोपी इंडेक्स। वाइल कॉन्सेंट्रेशन रेशियो एंड HHI, हर्फिंडल इंडेक्स, वो ज्यादा कॉमन टूल्स है, एंट्रोपी इंडेक्स एक सोफिस्टिकेटेड टूल है जिसमें वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ समथिंग, वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी, right? So basically we treat market share like probability and measure the amount of uncertainty in the market, ठीक है। तो अनलाइक अदर शेयर्स जहां पे जो लोअर द वैल्यू meant perfect competition, यहाँ पे देखो लोअर वैल्यू मींस लो कॉन्सेंट्रेशन, लोअर वैल्यू means low concentration, unlike other measures entropy index में higher entropy index means competitive market, lower index means high concentration, ठीक है। तो एंट्रोपी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? व्हाट इज द एंट्रोपी इंडेक्स? एंट्रोपी इंडेक्स E is summation I from 1 to n SI ln 1 by SI, ठीक है। अच्छा, हमें पता है, ऑल ऑफ अस नो दैट ln m बाय n फॉर्म में अगर ये है, तो अच्छा लीव दैट, दैट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। पहले देखो ln 1 by s, 1 by s कैन बी रिटन एज ln s टू द पावर -1 बेटा, एंड ln m टू द पावर n कैन बी रिटन एज n ln m, इसको हमने लिख दिया -1 ln s। तो दिस थिंग कैन बी री रिटन, इसको हम रीराइट कर सकते हैं। एंड हाउ कैन वी गो एंड हाउ कैन वी रीराइट दिस थिंग? इसको हम लिख सकते हैं माइनस समेशन एस आई एल एन एस आई, आई फ्रॉम 1 to n, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। वेयर एस आई इज द मार्केट शेयर
of the ith firm, and it is expressed in, unlike HHI, यहां पे इसको हम एक्सप्रेस करते हैं डेसिमल्स में. माने अगर मेरा मार्केट शेयर 20% है तो इन डेसिमल इट विल बिकम 0.20. इसको हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे. n इज द टोटल नंबर ऑफ फर्म्स. ठीक है. एंड इसकी हम वैल्यूज निकालते हैं. सो व्हेन यू हैव मोनोपोली, माने 100% मार्केट शेयर इज विद वन फर्म. ठीक है. सो ln, तो अब देखो 100% मार्केट इज विद वन फर्म, सो शेयर इज 1. 100% becomes 1 now. I have to represent it in decimals. So 1.0, that means 1. And there is only share is 100%, so 1 and with a negative sign. Now I know ln 1 is 0, so I get 0 here. Okay. So if there is monopoly, then one firm is owning 100% of the market, entropy is 0. ठीक है. क्योंकि एंट्रोपी 0 है, इसका मीनिंग क्या है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है? इम्प्लीकेशन मीन्स नो अनसर्टेनिटी. Uncertainty with what? Uncertainty will with who will get to sell the next unit. थोड़ा समझो. अब अगर एक ही है जो रेलवेज को डील कर रहे हैं, तो रेलवे में जब भी किसी को टिकट खरीदनी होगी तो यू हैव टू बाय फ्रॉम दैट वन पर्सन, देयर इज नो अनसर्टेनिटी. But if so many people are selling a product, जैसे so many people in the vegetable market are selling banana, तो देर इज अनसर्टेनिटी कि नेक्स्ट डिमांड जब आएगी वो उन वेजिटेबल वेंडर में से हु विल डील विद इट, राइट? सो इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन द एंट्रोपी इज 1. 1 means that there is maximum uncertainty. Maximum uncertainty माने that whenever the demand will come, because there are so many firms, there is higher entropy, there is higher uncertainty that who will sell that next unit. जब demand generate होगी, who will sell it? That is what here we are going ahead and asking. Is it clear? Now, when is this entropy usually used? The entropy is usually used when we want to do how much, when we want to break down something called as within group and between group. माने अगर मुझे जानना है कि कितना कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग रीजन से आ रहा है, नॉर्थ अमेरिका में कितना कॉन्सेंट्रेशन है और यूरोप में कितना कॉन्सेंट्रेशन है, वर्सेस द फर्म विद इन दोज रीजन्स, राइट? देन आई विल गो एंड जब मेरे को डीकंपोज करना है कि वन प्लेस वर्सेस अनदर, and then firm within those two regions, when I have to do decomposability, usually then entropy is used, but it's a very sophisticated measure. ऐसा नहीं है कि बहुत often use होता है. It's not used very often because it's a very sophisticated measure. हम इसको बहुत rarely economics में use करते हुए देखेंगे, unless you do PhD. Yeah, you are of course policy maker of the country and you want to use it. Okay, so these are your main measures of your market concentration. कोई भी डाउट किसी को भी, any doubt, any name? ठीक है. इसके अलावा sometimes you will notice that there is something called as Hall Tiedemann index. इसको you can say additional. Hall Tiedemann index. हॉल टाइडमैन इंडेक्स, इस मेजर में मार्केट शेयर के साथ साथ फर्म्स का रैंकिंग को वेटेज दी जाती है. बड़ी फर्म्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, फर्म्स के नंबर्स को भी कंसिडर करा जाएगा और फर्म्स के साइज डिस्ट्रीब्यूशन को भी कैप्चर किया जाएगा. सो इट इज गोइंग अहेड एंड इट इज कैप्चरिंग बोथ द एस्पेक्ट्स, राइट? इट इज कंसिडरिंग द एस्पेक्ट ऑफ द फर्म्स शेयर
and also giving weightage on that basis. So how do we calculate the HTI? कैसे calculate किया जाता है? HTI is calculated as 1/2 submission I into SI. I from 1 to N minus 1. Right? So in HTI, we use market share of the firm, SI, right? But we also use the ordinal ranking of the firm. That is represented with I. Mane, for example, if I just go back to this is rank is 1. So it will be 1 into 65, right? Rank is 2. So it will be 2 into 7. Rank is 3. So it will be 3 into 5, 4 into 3. So we are also going ahead and we are also considering your rank. Right? And another thing, यहाँ पे भी market share is expressed in the decimal terms. तो माने the market share will not be 65, it will be 0.65, 0.07 and so on. Right? So market share expressed in decimal terms. Right? And ranking of firm भी दी जाती है and NR the total number of firms. ठीक है? अच्छा इसमें again if we have monopoly, माने there will be only one firm. So it will be 1/2. There is only one firm with 100% share minus 1. So it will be 1/2 minus 1, 1 by 1, 1. So when we have 1, it represents a monopoly. And as this approaches the value of 0, right? जैसे HTI approaches the value of 0, it means that there is perfect competition. Because there are infinite. देखो इसको अगर 0, if this has to approach 0, that means denominator has to be infinity. Anything by infinity is 0. और अगर denominator को infinity करना, that means there have to be infinite number of equally sized forms. That means large number of forms, right? तो एक बात इसमें समझने वाली है that HHI, Herfindahl-Hirschman Index, it emphasizes absolute market share by squaring it. 65 plus 7 plus 5, इन सबको square करता जाता है. But this emphasizes on your relative position. ये बताता है आपका position क्या है. Okay, your share is 65%. But is your position the first or second? Okay, you have 7% of the share. But 7% क्या आप 8th position पे आके आ रहे हो या 7% क्या आप second position पे होके आ रहे हो? So it is also emphasizing the relative position of the firms in the market. ठीक है? माने it is sensitive to the total number of firms. समझ रहे हो? It is very sensitive to the total number of firms in the market. अगर 4 firms में equally distributed है versus अगर 4 firm में unequal distributed है, उसको तो वो देख ही पा रहा है. बट अगर 4 की जगह 10 फर्म हो जाए, when the firm increases, then also it becomes very sensitive, क्योंकि फर्म की रैंकिंग से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, right? The next index that we have, that's called as Hanna K index. Hanna K index. Hanna K index basically is a generalized form of Herfindahl-Hirschman index. So instead of putting the power 2, you have power alpha. Right?
Now if power becomes 2, then Haneke index is Herfindahl-Hirschman index. If it is more than 2, माने large firms को और ज्यादा weightage मिल रहा है. 65 जो पहला फर्म था जिसको 65% शेयर लिया था हमने, अगर हम उसको पावर 3 कर दे, इट मीन्स इट्स गेटिंग मोर वेटेज. एंड इफ इट इज लेस देन 2, it means smaller firms are getting more weightage, right? So this is usually used when the researcher wants to go ahead and wants to alter the weightage himself. माने वो जब चाहता है कि नहीं, मुझे हमेशा फर्म्स के शेयर को 2 का वेटेज नहीं देना, I want to change the weightage I am giving to the firms, then this index will be used. Now, इसी का एक alternative measure which you will see in some books, it is this. Summation SI to the power alpha to the power 1 upon n 1 upon alpha minus 1. This is also sometimes used in books. Again, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, when it is 2, it is exactly Hirschman index, क्योंकि अगर आप अल्फा को 2 प्लग इन करोगे, so 1 upon 2 minus 1, that means 1 upon 1 means 1, so you will get exactly Hirschman index. As alpha approaches 1, then HKI, it converges to entropy index, right? And as alpha approaches infinity, then this HKI, the index becomes entirely focused on single large firm. It is like the absolute concentration ratio CR1. It approaches concentration ratio CR1. ठीक है, तो ये अगेन दिस इज एडिशनल, बट आपको जस्ट समझना है व्हाट इज हैना के इंडेक्स. इट्स अ जनरलाइज्ड वर्जन ऑफ हर्शमैन हरफिंडल इंडेक्स. ठीक है, देन you have something which is known as Rosenbluth index. Rosenbluth index. The Rosenbluth index, also called as the Hall-Rosenbluth index, इसमें भी rank firms का use होता है. ठीक है, this is also where we go ahead and we give focus to the ranking of the firms की firms की ranking क्या है, right? ये भी it's a measure of market concentration, but it is deeply rooted to the geometry of Lorentz curve. ये भी हम Lorentz curve से निकालने की कोशिश करते हैं. So the formula of the of the Rosenbluth index, it is 1 upon 2 summation I from 1 to n I SI minus 1, where SI is market share of the firm, I is rank of firm, and n is total number of firm. Now you will think, मैम ये फॉर्मूला तो आपने अभी ही लिखवाया था. The formula is mathematically identical to Hall-Tiedemann index. ठीक है, in many academic texts they are used interchangeably. They are even cited together because Hall and Tiedemann formalized this, right? But Rosenbluth pioneered it. But he also went ahead and he also used the Lorentz curve to think about it. तो उन्होंने क्या बोला कि consider a graph जहां पे x axis is cumulative number of firm and the y axis is cumulative market share, right? Rosenbluth index represents the reciprocal of the area which is associated with high concentration curve. अगर मैं यहाँ पे 100% ले लूं और यहाँ पे भी 100% ले लूं,
तो ये मेरा है कर्व विच शोज द कॉन्सेंट्रेशन. दिस कर्व शोज इक्वालिटी. ठीक है. सो द Rosenbluth index, it is the reciprocal of the area which is associated with the concentration curve. Okay. Is it making sense? So area under the concentration curve is B. This is A. अब अगर अगर ये curve it goes down and here. So as it goes here, it means that there is increase in concentration with few firms. Right? It is highly concentrated. Right? The area under the curve becomes zero. जो हमारा concentration वाला curve है उसके नीचे का area zero होता जा रहा है. Right? And when you have low concentration area, that means the curve will approach this line. It will become closer to the 45-degree line. Is it making sense? Okay. So this is about your this index. So these are few of the index which you have to keep in mind. They can be asked in your exam. And मार्केट कॉन्सेंट्रेशन एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड टॉपिक है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना ही करना. ओके ओके. एनी डाउट, एनीवन, एनीथिंग दैट इज नॉट क्लियर? ओके, थैंक यू.